Assalamu alaikum, dear students. I welcome you again in this offline class. Uh, it is for 10th class English and topic we're continuing with the ghat of the only world. So today we'll do its exercise. Now the question number one is, what were the common things between Ghosh and Shahid? Amitabh Ghosh, writer, and Shahid. There were many common things among two friends. They had a large number of common friends in India, America, and elsewhere. They had a common love of Rogan Josh, Roshan Ara Begum, and Kishore Kumar. They had a natural indifference to cricket. They had an equal attachment to old Bombay films. यानी बहुत सारी चीज़ें इनमें कॉमन थी. बहुत सारे दोस्त भी उनके कॉमन थे. उनकी लाइकिंग्स भी कॉमन थी. गज़ल बेगम अख्तर गज़ल गो या कश्मीरी क्विज़िन रोगन जोश, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें उनमें कॉमन थी. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट शाहिद लव्ड? किस किस चीज़ को, कौन कौन सी चीज़ शाहिद को बहुत पसंद थी? तो बहुत सारी हमने जब आप लोग पढ़ोगे अच्छी तरह से इस लेसन को तो आपको पता चल जाएगा. तो अभी मैं बता देता हूँ कि शाहिद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड. खानों का शौकीन था. ही वॉज अ फैन ऑफ रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार. ही लव टू वॉच ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स. Shahid had a friendly nature. There was never an evening where he had not a पार्टी इन हिज लिविंग रूम. यानी पार्टी या मनाने का करने का बहुत शौक था उसमें. वंस ही सेड टू द राइटर, I love it that so many people are here. I love that people come and there is always food. I love this spirit of festivity. It means that I don't have time to be depressed. तो खानों का बहुत शौकीन था, खिलाने का बहुत शौकीन था. और इसी तरह से हाउ डज शाहिद फेस डेथ? डिस्क्राइब द हॉस्पिटल सीन. हॉस्पिटल में क्या होता है जब शाहिद की मौत करीब आती है, तो क्या उसका तरीका होता है? शाहिद न्यू अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ. ही वॉज नेवर स्कर्ड ऑफ इट. वो उससे डरता नहीं था, उसको पता था मौत नज़दीक आ रही है. ही टुक इट कामली. यानी उसने अब कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि आनी है तो आनी है, अब मरने से पहले क्या मरना है. तो इत्मीनान से उसका वेट किया उसने. He was even philosophical about it. He once said to the writer, I love to think that I will meet my mother in the afterlife. यानी माँ से उसको बहुत प्यार था, तो वो एक तरह से ये कहता था कि मैं यहाँ से जाके माँ से मिलूँगा. Once before his death, Shahid was in hospital for a surgical procedure. When it was time to leave, the hospital escort, Iqbal, arrived with a wheelchair. Shahid waved him away. He said that he was strong enough to walk out of the hospital on his own, but he was weaker than he had thought. His knees buckled after a few steps. Iqbal ran back for the wheelchair, leaning against the hospital wall. A kind of joy came upon Shahid when the hospital orderly returned with the wheelchair. Shahid gave him a smile and asked where he was from. The man said that he was from Spain. Shahid clapped his hands and said at the top of his voice, I always wanted to learn Spanish just to read Lorca. ग्रेशिया लॉर्का, स्पेनिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट. तो ये एक सीन था हॉस्पिटल में जब वो उसको सपोर्ट देने आया, वो स्पेनिश बॉय इकबाल. तो उसको उसने कहा कि ने अप्रोचिंग डेथ थी उसकी, तब भी उसने कहा कि मैं स्पेनिश जानना चाहता था, लेकिन क्या करें, क्योंकि ग्रेशिया लॉर्का को पढ़ना चाहता. पोइट और ड्रामेटिस्ट जो थी स्पेन की, उसको पढ़ने के लिए मैंने हमेशा चाहा था कि मैं स्पेनिश सीखूं, लेकिन देर हो गई. Who is James Merrill? एक जेम्स मेरिल का जिक्र है इसमें. तो वो कौन था? James Merrill was a poet who radically changed Shahid's style of writing poetry. Now Shahid started experimenting with strict metrical pattern and verse forms. तो उसने शाहिद को सिखाया metrical forms and verse forms किस तरह से पोइट्री लिखनी होती है. तो एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर एक क्वेश्चन है इसमें कि हंसा देने यानी वाली चीज़ें इसमें क्या है, यानी ह्यूमरस चीज़ें क्या हैं. देखिए क्या क्या है. Shahid knew of his approaching death, yet he never gave up his joviality. Once he was to leave hospital after a surgical procedure, Shahid was too weak to stand up. Even the hospital orderly brought a wheelchair for him. With a beaming smile, Shahid asked him where he was from. The man said that he was from Spain. Shahid clapped his hands gleefully
and said that at the top of his voice, I always wanted to learn Spanish just to read Lorca. इसी तरह से दूसरी जगह हने हालांकि शाहिद गिर चुका था वहाँ से, वो खुद नहीं चल सकता, तो वो लड़का उसको सपोर्ट देने के लिए आया, लेकिन इस पर भी शाहिद ने एक अच्छा यानी ये किया, उसको माहौल को अच्छा बनाया. Once at the Barcelona airport, he was stopped by a security guard just as he was about to board a plane. The guard, a woman, asked, "What do you do?" Uh, "I am a poet," Shahid answered. "What are you doing in Spain?" "Writing poetry." The woman felt irritated and finally she asked, "Are you carrying anything that could be dangerous to the other passengers?" Shahid clapped his hand to his chest and cried, "Only my heart." तो ये भी एक ह्यूमरस बात थी. क्वेश्चन नंबर 6 जो है, What facilitated Ghosh to fulfill his pledge? How did it help him? तो प्लेज क्या था, कसम क्या, प्रॉमिस क्या किया था कि शाहिद के मरने के बाद वो उसके बारे में लिखेगा. Ghosh had pledged to Shahid that he would write about him after his death. To fulfill this pledge, Ghosh started keeping a record of every moment that he spent with Shahid. यानी उसने वो रिकॉर्ड किया, लिख के रखा जो बात उसको शाहिद के साथ होती थी, जो टाइम वो शाहिद के साथ गुजारता था. He also gathered all the information that he could about Shahid's life. All this helped him to fulfill his pledge. तो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज शाहिद's reputation as a teacher among his students? वो भी हमने पढ़ा इसमें. When you go through the book, you will find it there. Shahid's students adored him actually. बहुत तारीफें करते थे, बहुत इज्जत करते थे. They held him in deep love and respect. For some time, he taught at Manhattan's Barch College. When he was to leave this college, the students printed a magazine and dedicated the issue to him. और 8वां क्वेश्चन जो है, that's like this, what does the ghat of the only world mean? अब जो इसका इस लेसन का जो टाइटल है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ghat is a Hindi word which means the place at a river bank from where where boats sail off with passengers for the other bank. जहाँ से नाव निकलती है, किश्तियाँ निकलती हैं, तो उसको हम घाट कहते हैं. समंदर में जो जगह, इसमें दरिया में जो जगह होती है, आमतौर कश्मीरी में भी उसको हम घाट ही कहते हैं. तो here the only world is a symbol of man's life on this earth, and the ghat is the bank point of death from which man sails off for the other world. यानी जहाँ से दूसरे दुनिया के लिए इंसान निकल पड़ता है, तो ये वाहिद जो मौत जो है, तो ये गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड है. तो आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे. तो कल इसकी हम बाकी जो है लैंग्वेज वर्क करेंगे इंशाअल्लाह.